and welcome to Pahuja Law Academy. This is Ginny Rajvanshi with yet another interesting video, and the topic for today is how to prepare for judiciary exams या how to crack judiciary exams. सबको ये क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर हमें कब अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या कॉलेज के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर आफ्टर कॉलेज हमें ड्रॉप करके देन स्टार्ट करना चाहिए. So today I will try to answer all of those questions and we will see comprehensively that what should be your core strategy that should never change or that should never depend upon which year of college you are. It does not matter, right? So let me take you towards the judiciary preparation strategy. So the first, according to me, that I will suggest is you should see which state you want to appear. आपको पहले ये एक माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि which state you want to appear for the judiciary exam. See, because it is very important. Though we don't have the integrated national judiciary exam, right? We are having it state-wise, and we all know that the syllabus of other states are different from the other states. So that means first of all, तो हमारा focus ही ये होना चाहिए that we should bifurcate our mind strategy, that for what state we are going to prepare for, or for what stage we will be appearing for, right? So the first and foremost motive of yours should be on the basis of state choosing, and obviously this state choosing will depend upon your language, right? What language you prefer, what language you are comfortable with, what is your local language, right? Like for example, if you go, the majority of students, if I talk about, goes for the Hindi language, right? So you all can appear for UP, Uttarakhand, Rajasthan, MP, right? छत्तीसगढ़, झारखंड, ये बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास. बट देयर विल बी ऑब्वियसली अदर स्टूडेंट्स आल्सो, मे बी अ गुजराती और अ बंगाली, सो ऑब्वियसली दे विल प्रेफर देयर स्टेट एग्जाम, राइट? सो द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न हियर इज नॉट टू व्हिच स्टेट you belong, but to what state you are targeting for, correct? The second point of contention, according to me, in your judiciary exam is, first and foremost, you should see the previous year question papers, that are the PYQs. You should definitely have a look on the PYQs, because to understand and analyze the concept, to understand and analyze the examination, for you it is very important. You should know, there is a saying that even if you have to make a jump, then you have to see, how much jump you need to make. तो पहले आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिस एग्जाम को आप प्रिपेयर करने वाले हो या जिस एग्जाम को आप देने जाने वाले हो, उसका पैटर्न कैसे आता है, हाउ इज द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न डन, हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, राइट? From which major part of the questions are asked, right? And again, state-wise, maybe the subject or syllabus would be different, right? So you have to definitely and understand and analyze. I'm using the word analyze. आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं देखना है PYQs, आपको उनको analyze करना है in order to understand that what kind of questions are being asked in the exam. See, third is reading the bare acts. Once you have done this, once you have analyzed the question, you will get a fair amount of idea that what approach you should have, while preparing the judiciary exam. The next point of contention comes reading the bare act. See, now obviously in the judiciary exam or judiciary market, there is this myth that bare act reading is very, very dangerous. It is very difficult. No, it is nothing like that. Bare act reading, trust me, it becomes very simple, very easy once you understand the language of the bare act, right? Obviously, जब आपको bare act language समझ में नहीं आएगा, it is full of legal jargons. For you, it will be very difficult to understand the bare act. But once you get the hold of that bare act, that will become very smooth for you. And how will you get the hold of the bare act? Obviously, by reading it again and again. आपको दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा bare act. It is said, there is this saying in judiciary that if you read the bare act like this, like from the very starting till the end, and then from the end to the starting, you do this process 7 times,
you will be an expert in the reading of their act. But obviously, it's not possible. See, we as being students, we have paucity of time. Maybe we are preparing for the judiciary exam and we want to clear it within 1 year, right? So within 1 year, it is not possible for me to read one Bare Act 7 times, right? So how do I do the mastery of Bare Act? To do the mastery of Bare Act, you have to keep some things in mind, right? Like for example, while reading Bare Act, आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है, which is very important. Like for example, I will tell you, you have to make a difference between or and. You know, sometimes in the Bare Act, the word or is used, but actually its interpretation is and, right? तो ये होता है कि वर्ड यूज होगा और, पर उसका इंटरप्रिटेशन होगा एंड. और मतलब कोई एक, या तो ये, एंड मतलब दोनों प्लस. तो उससे पूरा जो कंसेप्ट है सेक्शन का वो चेंज हो जाता है. जैसे हर एक्ट में ऐसा होता है, जैसे आईपीसी में सेक्शन 84 और 85 में ऐसा है. जब हम इंटॉक्सिकेशन और अनसाउंड माइंडनेस की बात करते हैं, वहां वर्ड लिखा है और, but you have to interpret it as and. आपको उसको इंटरप्रेट एंड करना है. या जैसे सेक्शन 30 में पार्टनरशिप के माइनर वाला जो सेक्शन है, उसमें भी वर्ड लिखा है और, लेकिन आपको उसको भी इंटरप्रेट करना है एंड. सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि Bare Act per se is not difficult at all. It is just the interpretation of Bare Act that you have to learn with time. ठीक है? And obviously the coachings help you in learning this interpretation of the Bare Act, right? Now coming to the fourth contention, Bare Act reading is done. Fifth, you should know where to give what time. आपको पता होना चाहिए कि आप कितना टाइम कौन से टॉपिक को दे रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 7 और चैप्टर 9 ऑफ आईपीसी, इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. मेंस में कभी उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए. इसीलिए आई टोल्ड यू फर्स्ट स्टेप यू शुड डू इज एनालाइज द PYQs. Once you analyze the previous year question papers, you will come to know which topic is important and which chapter is not being asked, right? So that is why you should know what time you are giving to what subject and what time you are giving to what topic in that subject, right? You have to bifurcate that. Then you have to definitely go through the landmark judgments. See, this is the only difference that comes in an average student notebook, the answer sheet and the topper's answer sheet. सिर्फ यही एक major difference होता है जो we being teachers also we analyze when student gives us the mains answer. Whatever case laws are being discussed or whatever landmark cases you write in your mains answer, that is not suffice. If you have to enhance your answers, if you have to enhance your knowledge and preparation, and you are targeting, you know, that you have to achieve the maximum marks in mains exam, you have to read the landmark judgments. You have to follow live law religiously. आपको अपने नोट्स को बार बार एनहांस करना पड़ेगा लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ के. और जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे या जो भी रिसेंट जजमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो लैंडमार्क तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में रिसेंट भी पढ़ने हैं और अपने नोट्स को एनहांस करते रहना है रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स या जजमेंट्स से. ठीक है? देन नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन दैट यू नो हमें बहुत मोटी रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी. जितना मोटी रेफरेंस बुक उतना जल्दी जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाएगा. ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. फैट रेफरेंस बुक से कोई लेना देना नहीं है. बट यस, you have to make sure कि आप अपने नोट्स बना रहे हैं. maybe whatever coaching like PLA you join, so we give you comprehensive class notes. हम आपको पूरा क्लास नोट्स में सब कवर कराते हैं. हम भी क्लास नोट्स प्लस Bare Act में बिलीव करते हैं. and then you have to enhance your answers. Obviously, if you know 1 year passes, 2 year passes, so you have to enhance your answers and notes with the recent judgments. And yes, you have to refer one book. We always recommend to the students to refer only one authentic book. अब वो authentic book कौन सी होगी वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकती है. जैसे हम कॉलेज में देखा करते थे कि किसी बच्चे को
केडी गौर से समझ में आ रही है आईपीसी, किसी को पिल्लई से समझ आ रहा है, किसी को एसएन मिश्रा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो लेकिन जब आप जुडिशरी की कोचिंग में आ रहे हैं, अब आप सिर्फ कॉलेज एग्जाम नहीं देने वाले हैं, अब आप एक जुडिशरी एग्जाम देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। तो अब आपको कोई एक रेफरेंस बुक ऐसी चूज करनी है जो ऑथेंटिक हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एसएन मिश्रा। एसएन मिश्रा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आफ्टर द ऑथर हैज डाइड ये बुक अपडेट नहीं हो रही है, तो ये बुक का तो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। फिर बात आती है पिल्लई और केडी गौर। तो पिल्लई एकदम परफेक्ट रेफरेंस बुक है एंड केडी गौर इज फुल ऑफ केस लॉस, तो आप केडी गौर को केस लॉस के लिए रेफर कर सकते हो। तो वी इन योर कोचिंग हम बताते हैं आपको कि आपको कौन सी एक ऑथेंटिक बुक रेफर करनी है, ठीक है। तो एक ऑथेंटिक बुक क्लास नोट्स एंड डायरेक्ट कमांड, trust me this is enough and the upgrading of your notes with the recent case laws, trust me it is enough for the जुडिशरी प्रिपरेशन। बच्चे इतना सारा सोर्स मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं या देखते हैं कि अरे आज ये नई बुक लेके आया मेरा फ्रेंड, चलो ये वाली भी ले आता हूं, इससे भी पढ़ लेता हूं। आपको ये गलती नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक। Just keep your sources limited. You must have seen many toppers talks, right? आपने देखा होगा बहुत सारे toppers को, उसमें सिर्फ एक ही common चीज होती है, one common thing. They always keep their resources limited and they always believe in revision. The maximum or the limited resources and the maximum revision you do, the chances of your success will also enhance, right? So you have to keep your resources limited. Bare Act command and you have to read the Bare Act with the interpretation. How you will learn that interpretation? It's all up to you. You read the book of interpretation, you join the coaching classes, you do it on your own by self-study, but just mere reading of Bare Act will not help. You have to understand and interpret the Bare Act, right? Second, whatever class notes or your own notes you are making, you have to upgrade them with the recent judgments. And one reference book, that is an authentic reference book, should be there, ठीक है। And the last thing is you have to revise every day. जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्लियर करने के लिए। But even after all this, I will give you one more personal suggestion. That personal suggestion is, ये सब तो आपको करना ही है on the professional field, but on the personal field you should always keep calm and patient. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए कूद रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, तो आपको पेशेंट तो होना ही पड़ेगा। कुछ एकदम से नहीं मिलता है सक्सेस, ऐसा देखा होगा आपने बहुत बार, या हम सोचते भी हैं कि यार जो मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में वो बड़ा ही एवरेज था, उसका फर्स्ट ही गो में सिलेक्शन हो गया एंड आई वाज द टॉपर। ये बहुत बार होता है, आई वाज द टॉपर और मुझे नहीं हुआ सिलेक्शन 2 बार 3 बार। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? होगा सिलेक्शन, हार्ड वर्क नेवर गोज ऑफ, कभी काम वेन में नहीं जाता है हार्ड वर्क, बट इट्स जस्ट दैट कुछ कमी है आपकी प्रिपरेशन में, तो आपको खुद से ही वो अपनी कमी को दूर करना है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, द ऑथेंटिक communication, the authentic bag of tips that I would want to give to any judiciary aspirant who is beginning his or her study. And yes, one more question that comes, that when we should start the preparation. Trust me, there is no age or there is no college year of starting the preparation. Whenever you think you are mentally prepared, you are mentally ready for starting the judiciary preparation or any competitive exam, just go for it. But of course, you have to see all the background checks, you have to make yourself ready, and you have to follow all these steps. Trust me, you will sail through. Everybody sails through with time, right? I hope you will find this video really interesting and helpful in your judiciary preparation. Please do like the video, subscribe, and do share it forward with your friends also who are going to prepare for judiciary. Thank you very much and have a nice day.